जय जगन्नाथ पिलाने आज आम गोटे जोटा ओडिशा बजेट उपरे किसी आलोचना करवा जोटा बहुत सारा वीडियो तो यूट्यूब वाईटी रे अच्छी बट फिर भी टिके देखिबा ओडिशा बजेट रो विशेषत्व कौन थिला एवं बजेट रे कौन कौन विशेष नुआ योजना दिया जाइए बस बहुत सारा जिनस देखा आम ठीक अच्छे सो ओडिशा बजेट 2025-2026 लेट्स हैव ए लुक अबाउट दैट. Before that, look at the inspiring quote. It is not over. It is not. It is never too late to be what you might have been. Okay, so never think that time has been passed. ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବା ଆମେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଏଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର୍. ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଟ୍ ଏନି ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବିକମ୍ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍. ବୟସର ଗୋଟେ କିଛି ଲଗାମ ନଥାଏ. जो कौन अवस्था भी थे जेकोसी बयस भी तुम्हें सफलता कौन भी क्षेत्र में पाइबापी लागू कर. ठीक है, आरंभ करवा. गोटे फैक्ट मन रख कि फर्स्ट सेंट्रल स्टेट रिलेशन कमिशन वाज अपॉइंटेड इन 1983 बाय सरकारी आरएस सरकारी कमिशन. मैंने बजेट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. आर्टिकल 202 रे आर्टिकल 202 रे बजेट कथा रही. आर्टिकल 202 रे स्टेट बजेट आर्टिकल 202 रे अच्छी स्टेट बजेट कथा एंड दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट. सो आम जमी देखुचे 112 आर्टिकल रे यूनियन बजेट अच्छी सेमती स्टेट बजेट 202 रे अच्छी. एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. बजेट इज सो कॉल्ड नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बजेट शब्दटा आम संविधान रे नाही. तापय आम एनुअल फाइनेंशियल एस्टिमेट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर बोली कहूचे. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर बोली आम कहूचे. तो सेटा गवर्नर इंट्रोड्यूस करेंगे. गवर्नर will ensure that the state budget is introduced in the state legislative assembly before the commencement of the financial year. এটা ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଲିସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଟେଲ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ଦିଆଯାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର. ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବଜେଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଖାଲି डॉक्यूमेंट नुह. यहाँ गोटे सोशियो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट. एवं एथरक ओडिशा बजेट रे बहुत सारा न्यू इनिशिएटिव रही. एटा 17 फेब्रुआरी रे लॉन्च होती. फाइनेंस मिनिस्टर जी की चीफ मिनिस्टर एटा को इंट्रोड्यूस कर मोहन माझी मिस्टर मोहन माझी. तो देखा आम कि ओडिशा बजेट रो जो रही कौन कौन विशेषत्व सेटा देखा. ठीक अच्छे. तो पे ओडिशा बजेट रो जो अच्छी फोकस अच्छी समृद्ध ओडिशा 2036 विकसित ओडिशा तार जो रही पाखापाखि केते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक अच्छे. सो 9 जो एरियाज रही जहाँ पर विकसित ओडिशा गठन हम 2036 सुधा. तो से समृद्धि अच्छी डेवलपमेंट समानता इक्वालिटी डिफरेंट कैटेगोरीज रो इन्वेस्टमेंट इन पीपुल अर्थात बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेस स्वस्थ ओडिशा हेल्थ उपर गुरुत्व दिज्व. एवं रिजनल पारिटी जो रही ओडिशा भितर कोस्टल ओडिशा वेस्टर्न ओडिशा सर्दर्न ओडिशा डिफरेंट इंटीरियर जो इम्बालांस रही इंफ्रास्ट्रक्चर रे जो एम्प्लॉयबिलिटी रे विभिन्न प्रकार सेक्टर ताको एलिमिनेट करा रिजनल पैरिटी अर्थात इक्वालिटी अनाब. ओडिशा ओडिया अस्मिता अर्थात ओडिया कल्चर ओडिया लोकंकर प्रायोरिटी दिज्व गवर्नमेंट सेक्टर रे. देन पीपुल्स गवर्नमेंट पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट प्रमोट करा जीवो. अन्नदाता अर्थात मिनिमम बेसिक नीड्स टू द पीपुल एंड क्लाइमेट रेडी ओडिशा अर्थात क्लाइमेट चेंज पाई भी ओडिशार फोकस रहिबो. क्लाइमेट चेंज को कोप अप करने क्लाइमेटिक सेक्टर रे केमती काम हो. तो ये 9टी क्षेत्र रे कौन करा जीवो फोकस रहिबो. ओडिशा बजेट 2025-26 रे रही एवं समृद्ध ओडिशा 2036 सुधा गठन बोली लक्ष्य रखाई विकसित ओडिशा. ठीक अच्छे. नेक्स्ट इज योर देखिए जब इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ ओडिशा रे जीएसडीपी जोटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जोटा टोटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट सेटा कैलकुलेट करा जाए. आम देखा यहाँ निश्चित भाव में बढ़ी बढ़ी चली. तो ए वर्षर अच्छी 91,040 crore रुपीज रही जीएसडीपी एस्टिमेट रही 94,091 140 crore
रुपीज जोटा कि एवरेज एस्टिमेट रखा एनुअल एस्टिमेट और लास्ट ईयर थिला 2023-24 रे दैट इज 86,026 crores सो 2024-25 पे रही 94,91,140 कोटी टंका रही ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक अच्छे तापर देखा आम के जो सेक्टर वाइज रही जो ओडिशार कंट्रीब्यूशन टू जीएसडीपी एटा बहुत इंपोर्टेंट हो पारे कारण आम जहाँ भी देखुचे एग्जाम ओरिएंटेड देखा जोटा आम बहुत हेल्पफुल हम राइटिंग रे ओडिशा कारण ओपीएससी एग्जाम गुड़ाक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रे ओडिशा रिलेटेड मैटर गुड़ा बेसी पचारे तेणु एगुड़ा बहुत गाइडलाइन दब आमको एवं बहुत डाटा दब जोटा कि आमको टिके प्रैक्टिस रखा पड़ो तो ओडिशार जो रही कौन कंट्रीब्यूशन रही डिफरेंट सेक्टर इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी टू जीएसडीपी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तापे कौन कौन रही हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर रही इंडस्ट्री सेक्टर सो इंडस्ट्री सेक्टर 43% रही जोटा तुम देखिपरथिबो 43% रही इंडस्ट्री सेक्टर जीएसडीपी कंट्रीब्यूशन एवं एग्रीकल्चर इज 21 सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर इज 36%. So you can conclude that industry is the highest contributor to state the GSDP in Odisha, and agriculture is the lowest one, and the service sector also contributes substantially to the Odisha GSDP, Odisha gross state domestic product. This is a brilliant data that you have to remember कि को sector रू केते पैसा GSDP को आसुची ठीक अच्छे नेक्स्ट प्लान देखिबा एटा कि जोटा रुपीज केत को क्षेत्र रू पैसा इनकम हम टोटल इनकम रखाई 2,90,000 कोटी टंकार बजेट रे कि कोटा कोट आसीबो पैसा तो प्लान बहुत बढ़िया डाटा एटा तो मेजर तो देखिबा जदी हमें हाईएस्ट देखिबा स्टेट रो ओन टैक्स रू 23% आसीबो स्टेट जो टैक्स इंट्रोड्यूस करूची बा जो इंपोज करूची कलेक्ट करूची सेतु निजर टैक्स रू से 23% पाइबो एंड इट इज द हाईएस्ट अमंग ऑल जोटा हमें देखिबा कि स्टेट गेट्स इट्स इनकम highest from its own tax 23% and also that is own non-tax रू भी 21% आसी तो माने 23 plus 21 तो बाकी 44% स्टेट निज इनकम रोची शेयर इन सेंट्रल टैक्स 22% ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर 14% एंड कैपिटल रिसीट जो होची 20%. ओके बिल्डिंग एंड अदर्स जो सब होची कैपिटल रिसीट्स जो बिल्डिंग तैयारी होची बा विभिन्न प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी होची जो कैपिटल रिसीट्स रो 20%. So these are the major ideas, major data that you can use in your writings. तो इटा हमें देखिए पड़िबो एगुरा सब बहुत बहुत काम दबो हमर लेखा रे ठीक अछि रुपी गोज टू कोडी खर्च होबो पैसा खर्च होची बेसी प्लान देखि परथिबो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 30 दैट इज 9% होची प्रोग्राम एक्सपेंडिचर जो डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स रो चलची प्रोग्राम एक्सपेंडिचर ओरा अमेरिका रे इंट्रोड्यूस प्रोग्राम बजेट तो सेटारे जो डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स बा डिफरेंट जो पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम उसता पे 59% खर्च होबो गवर्नमेंट रो एवं डिजास्टर मैनेजमेंट फंड रिस्पांस पे 1% दे जिवो ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट्स 3% and administrative expenditure but salaries and others 37%. So that is also a very useful data you can take example of. तो देखिबा एटा गोटे भल जिनसटा कि स्टेट रो ओन टैक्स रेवेन्यू कौन कौन रहे स्टेट रो ओन टैक्स एटा बहुत सारा पिलांकर जो लेखिला बेले प्रॉब्लम हुए कि ये सब बजेट रू सब एक्यूरेट डाटा हमें पाइबा तो हमें देखुचे जो स्टेट रो ओन टैक्स जोटा हमें देखिले केते परसेंट रही स्टेट रो ओन टैक्स हमें जो देखिले केते परसेंट रही स्टेट कम्स फ्रॉम स्टेट टैक्स जो देखुचे हमें 23% जो अच्छी से 23% कौथरु आसूची सेटा होची एटा गोटे एस्टिमेट दियाइची जीएसटी स्टेट जो गुड सर्विसेज टैक्स रू 42% 42.69% शेयर अच्छी तार हाईएस्ट होची स्टेट रो इनकम टा टैक्स इनकम टा होची जीएसटी रू केते परसेंट रहउची 42% एंड देखिबा हम जदी सेल्स टैक्स रू 24.20% आसी एवं मोटर व्हीकल टैक्स रू 4% land revenue 1.48 is the second lowest and
stamp and registration fees ru 3.96%, tax duties on electricity ru 7.02, state excise ru 14.78, and lowest is other taxes and duties, that is 1.28. So these are the cumulative, that is the list of the sources of state tax. You can have also the idea कि state रो own tax रो कौन रहे, इटा गोटे भी मेजर आइडिया में नहीं परिबा कि कौन कौन रहे. बेसिकली स्टेट रो लार्जेस्ट टैक्स शेयर होची जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, that is 28,174.78 crore rupees will be there in during 2025-2026 नहीं कि सेटा गोटे बड़ा इनफॉरमेशन भी रहिला. 42% हाईएस्ट एंड लोएस्ट हम कहि परिबा लैंड रेवेन्यू अछि एंड अदर टैक्सेस भी अछि. तो এটা लोएस्ट हम এটা लोएस्ट कहबा एंड सेकंड लोएस्ट हला तुमरो सेकंड लोएस्ट हला जोटा हमर रेवेन्यू तमे ओडिसा लार्जर इनकम होची जीएसटी रु. ठीक है बोला नहीं. तो यहाँ गोटे आमर यूनिकॉर्न बैच फंडामेंटल फाउंडेशन बैच ओपीएससी अड्डार. तो यूनिकॉर्न बैच रे ऑलरेडी एडमिशन चली बैच क्लास भी किसी आरंभ हो. सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस बैच टू परस्यू कैरियर इन सिविल सर्विस. ए सब प्रकार रोचे पेपर गुड़ा जीएस पेपर 4टा रोचे, प्रिलिमिनारी भी रोचे एवं इंग्लिश ओडिया भी रोचे, इंटरव्यू गाइडेंस रोचे एक्सेप्ट ऑप्शनल. सो यू कैन rely upon this batch to start your career in civil service examinations. स्टेट रो ओन नॉन टैक्स प्लान दी प्रकार जो इनकम रहे स्टेट रो टैक्स और नॉन टैक्स. एक्चुअली नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू स्टेट रो बहुत लो थाए कारण एते प्रोडक्टिव सेक्टर न थाए स्टेट हाथ रे. तो तुम देखि परथिबो कि स्टेट रो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जोटा से निजे इनकम करे स्टेट रो इंटरेस्ट रिसीप्ट रो आसी 2.84, इंटरेस्ट रिसीव जो इंटरेस्ट आनुची डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स रू 5.50. मेजर होची माइनिंग रॉयल्टी अकाउंट्स फॉर 79.11% in Odisha. So we are getting more non-tax income from the mining sector. So there is a need for more conservation and more mining protection schemes in India. In Odisha, major and medium irrigation ru 2.16% and other receipts ru 10.38%. That is total. मैं देखी पारुचे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू 60,000 crore rupees is estimated to be earned by the state during 2025-2026 financial year. And in case of tax revenue, if you get it, in case of tax revenue, we are getting 66,000 crore from state's own tax revenue and 60,000 crore from non-tax revenue. Then other from other sources जो सेंट्रल टैक्स शेयर हला कि सेंट्रल सेक्टर शेयर रे बा अदर ट्रांसफर रे गुरा सब आछि. तो टैक्स इनकम और नॉन टैक्स आइकटरू एतिक आछि त माने पाखापाखि 1,26,000 crore आछि कुथ्रु टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू. If you look at the expenditure of 2,900 crore rupees budget जो हेची ओडिसा रे वर्ष 2025-26 बजेट रो बजेटरी आउटले होची 2,90,000. सेतिरे एक्सपेंडिचर जो कॉलम में देखुचे एक्सपेंडिचर कॉलम रे कोटा करा जाउची. प्रोग्राम एक्सपेंडिचर रे अधिक खर्च करिवे सरकार जो वेलफेयर प्रोग्राम्स बा विभिन्न सब जो प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होईची से गुरा सेतिरे 58.6% खर्च हो. एवं जोटा में देखुचे ईओएम जोटा में देखुचे प्लाने ईओएम जोटा कहूचे एस्टाब्लिशमेंट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट. ईओएम एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो निज खर्च एस्टाब्लिशमेंट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट खर्च जो अच्छी से 27.0% खर्च हम. मैनेजमेंट इटा तपरे प्रिंसिपल रिपेमेंट जो लोन रिपेमेंट 88% हम. ट्रांसफर टू लोकल बॉडीज इज वेरी minimal in Odisha 3.2% and interest payment 1.5%. Okay, so these are the things and disaster risk management 1% right. So these are the expenditures will be made in the state. So there are the items program expenditure,
establishment, operation management, principal repayment, transfer to local bodies, interest payment, and disaster management. These are the area where the state will spend money, and highest expenditure will be from on program expenditure. Program expenditure माने जोटा सब विभिन्न राज्य सरकार द्वारा जो सब ये होची विभिन्न प्रकार प्रोग्राम होची तापाई से जो खर्च हबो सेटा होची हाईएस्ट एक्सपेंडिचर. ठीक अछि, हाईएस्ट एक्सपेंडिचर हबो. ओके, सो इटा गोटे बहुत न्यू जिनस अछि जोटा 16टा नुआ योजना बा नुआ पदक्षेप नहीं सरकार 2025-26 रे. तो ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ अंत्योदय गृह योजना जोटा बिजू पक्का घर योजना थिला जो माने जो स्पॉन्सर्ड हाउसिंग स्कीम अंडर नहांती जेंति प्रधानमंत्री आवास योजना हला कि गुरा सब सेतरे जो माने नहांती तांकू ए स्कीम अंडर रे घर दिया जिवो. दोज आर नॉट कौन दोज मुझे देखुली कि जो माने लिस्टेड नहांती माने जो गृह योजना जोटा आम कहे प्रधानमंत्री गृह योजना. द स्कीम विल कवर फैमिलीज लेफ्ट आउट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसिंग स्कीम्स, विक्टिम ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स, पीपुल डिस्प्लेस्ड बाय गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एमंग अदर्स. तेणु यहाँ जो मैंने हाउसिंग स्कीम आसुना जमी पीएम आवास योजना है ये सब योजना जो मैंने आसुना कि जो मैंने विपर्यय बा नेचुरल मैनमेड डिजास्टर जो मैंने भिक्टिम होती घर द्वार नष्ट हो जाऊँगी एवं जो मैंने डिस्प्लेस होती गवर्नमेंट सेक्टर रु से अंत्योदय गृह योजना माध्यम दिज्व. तुम्हें देखिपार कि 2603 कोटी टंका ए वर्ष सैंक्शन कराई. सुभद्रा सुरक्षा योजना गोटे यूनिक स्कीम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड एटा इनिशिएटिव निया जाइछि फॉर सिक्योरिटी ऑफ वुमेन. इट हैज allocated 153 crore फॉर सुभद्रा सुरक्षा योजना. दैट इज ए न्यू इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तापरे जो अच्छी जगन्नाथ दर्शन योजना द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड जगन्नाथ दर्शन योजना एवं जगन्नाथ दर्शन योजना रे पुअर डिवोटीज विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट जगन्नाथ टेम्पल एंड ईट महाप्रसाद फ्री ऑफ कॉस्ट. तो यहाँ श्री जगन्नाथ दर्शन योजना गोटे करुँच गरीब लोक मानू महाप्रभु को दर्शन करने सब जो खर्च हम से सरकार ग्रहण करेंगे एवं सेटा गोटे स्कीम ता ना होची श्री जगन्नाथ दर्शन स्कीम. देन नॉर्दर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल जो गठन कराई नॉर्दर्न ओडिशा डेवलपमेंट 2025-26 बजेट रे एथिरे 200 कोटी दिया and addressing regional disparities, facilitating investment, improving governance in North Odisha districts. तो जो हम वेस्टर्न डेवलपमेंट काउंसिल अच्छी से भाया गोटे नॉर्थ ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल बा नॉर्दर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल तैयारी हम सरकार 200 कोटी टंका देइछन. ओडिशा पुष्टि मिशन जो न्यूट्रिशन इनक्रीज करने कराई तो यहाँ मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जोटा आम कहूचे मुख्य एमएसपीवाई एटा एमएसपीवाई होची. एमएसपीवाई है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना. एथिरे जो इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन एडोलेसेंट गर्ल्स चिल्ड्रेन अक्रॉस द स्टेट विथ ए बजेटरी एलोकेशन ऑफ 5 दैट इज 100 crore. ओके, ओडिशा पुष्टि मिशन. तापर बकुल वन उन्नयन 50 crores. आम सिमिलीपाल योजना 50 crores फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सिमिलीपाल एंड मॉडल मंडी योजना गोटे कराई 50 crores. शहीद लक्ष्मण नायक आदर्श विद्यालय इन पाटन ऑफ आदर्श विद्यालय आउरी पुअर सेक्शन मान को भल एजुकेशन देवाई शहीद लक्ष्मण नायक आदर्श विद्यालय योजना कराई. ओडिया डायस्पोरा ओ संपर्क 10 कोटी टंका. सो जो मैंने ओडिशार जो बाहर रोचंती एनआरआईज माने कि अन्य माने तांको सहित जोगाजोग करी तांको सहित सुसंपर्क रखिया सरकार ये योजना तैयारी करचंती एवं दैट इज आल्सो ए वेरी कौन वेरी important scheme for the government. Odia diaspora has made significant contribution in the field of technology, academia, healthcare. Then it 10 crore to have continuous engagement with the people of Odisha staying abroad.
तो यहाँ गोटे अच्छी शहीद लक्ष्मण नायक आदर्श विद्यालय जो गोटे डायस्पोरा गला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब लोक मानक मास मैरेज रे हेल्प करने 12 कोटी टंका दी जाइए। सर्दर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल एट पार विथ नॉर्दर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल कारण आम देखिले विकसित ओडिशा रे जो रिजनल पारिटी आने जो सरकार चाहिए से सब डेवलपमेंट काउंसिल तैयारी होची नॉर्दर्न ओडिशा सर्दर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल सो दैट जो रिजनल डिस्पैरिटी रही डिफरेंट रीजन रे ओडिशा रो ताकू केमती मेंटेन कराबो एवं आंचलिक साम्यता केमती स्थापना कराबो सेति दीटा मेजर काउंसिल कराई आगु वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल हैज बीन ऑलरेडी देयर तो से डायरेक्शन रे सरकार दीटा काउंसिल तैयारी करेंगे नॉर्दर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल एंड सर्दर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल तापई 200 crores दिखाई ठीक अच्छे स्वच्छ ओडिशा क्लीन ओडिशा 270 so it has been a priority of the government to have clean Odisha, clean cities, clean villages, so that is also there in that. Then आमे पढ़िबा आम भाषा रे so भाषा ओडिया अस्मिता जो आमे कहूचे ओडिया अस्मिता को प्रमोट करिया पई so एटा गोटे भी इनिशिएटिव आमे पढ़िबा आम भाषा रे 225 कोटी टका कराइछि अटल बस स्टैंड 1266 कोटी टका जो हाईएस्ट पेमेंट दियाइछि समृद्ध सहारा एटा अछि गोटे 400 crore तो समृद्ध सहारा जो आमे देखुचे समृद्ध सहारा the समृद्ध सहारा the government will launch समृद्ध सहारा scheme with allocation of 408 crores. The scheme seeks to transfer Odisha urban landscape into engines of growth. So सेटा urban development पे so इस 16टा योजना गठन इनिशिएट निया जाइछि ओडिशा 25-26 बजेट रे एटा बीजेपी गवर्नमेंट रो फुल बजेट फर्स्ट टाइम एवं बजेट गोटे पिला माने जोटा कहली कि खाली गोटे आर्थिक मापदंड नुहे एटा सामाजिक आर्थिक विकास रो मापदंड होता है एवं एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एवं बजेट रो जदि आमे इतिहास देखिबा बजेट शब्दटा बुगेटी शब्द रो आछि जोटा फ्रेंच वर्ड जा माने होछि लेदर बैग तो बजेट आम पई केवल गोटे आर्थिक दस्तावेज नुह एटा गोटे सामाजिक आर्थिक प्रगति गोटे मानदंड बोली कह जाए एवं बजेट रे गोटे स्टेट रो डेवलपमेंट को मेजरमेंट करा जाए ठीक अच्छे तो ये सम्यक वीडियो रे मो किछिटा अटेम्प्ट नेली कहया पई कि ओडिशा बजेट रे कोन कोन हुए मन रख कि ओडिशा बजेट भी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 202 एवं that is introduced in the legislative assembly and the initiative taken by the governor of the state एवं budget will come into effect from 1st April of this year will continue till March 31st 2026 so this is known as annual budget apart from the budget the state also receives certain grants after that if budgetary deficit is there so जेमती हमरो सेंटर रे बजेट अछि तापरे ग्रांट दिया जाए सेमती एठी भी बजेट पर भी ग्रांट बहुत सारा अछि एक्सेप्शनल ग्रांट सप्लीमेंटरी ग्रांट एंड सो रॉय सो दिस इज हाउ एंड ई जो बजेट पैसा विल बी ड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 आर्टिकल 2 अंडर रे क्लॉज 2 अंडर रे अच्छी कंसोलिडेटेड माने जेमती केंद्र रो जेमती तीनोटी फंड अच्छी कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट सेमती राज्य मान करे भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ओडिशा अच्छी कंटिजेंसी जो आकस्मिक पांठी जो कहती कंटिजेंसी फंड अच्छी ऑफ ओडिशा एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ ओडिशा अच्छी तीनटा फंड सरकार रहे कंसोलिडेटेड फंडटा असेंबली अंडर रहे बा स्टेट लेजिस्लेचर अंडर रे आर्टिकल 266 क्लॉज 2 रे ओडिशा स्टेट कंसोलिडेटेड फंड गठन कराई एवं सेमती 267 आर्टिकल रे ओडिशा स्टेट कंटिजेंसी फंड 267 क्लॉज 2 आर्टिकल रे गठन कराई एवं 267 क्लॉज 2 रे जो आकस्मिक पांठी गठन कराई सेटा गवर्नर बा राज्य सरकार को द्वारा परिचालित हुए विदाउट द लेजिस्लेचर विदाउट लेजिस्लेटिव सैंक्शन एवं परे सेटा रिकॉप करा जाए स्टेट लेजिस्लेचर ताकू रिकॉप करे किंतु प्रथमे ओडिशा कंटिजेंसी फंड रु सरकार पैसा उठै परिबे बिना कौन लेजिस्लेटिव असेंबली रो परमिशन रे बा सैंक्शन रे तापर सेटा रिकॉप हुए अर्थात पुणी सेटा फेरी जाए आकस्मिक पांठी रे सब बेले पैसा समान रहिता तो एबे जहा अवश्य एक्यूरेट इनफॉरमेशन नथिले भी 2300 कोटी अच्छी बोली जना पड़े सेमती पब्लिक अकाउंट है पब्लिक अकाउंट एटा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल द्वारा एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा कंट्रोल हुए तामाने प्रति राज्य रे तीनोटी फंड थाए जेमती सेंटर रे अछि कंसोलिडेटेड फंड कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट
तो ये सब पैसा एवं बजेट पैसा गुरा बा स्टेट रो जो टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू गुरा सेटा सब ओडिशा स्टेट कंसोलिडेटेड फंड रे डिपॉजिट होता है एवं ओडिशा कंटिजेंसी फंड रे केवल किछि कर्पस थाए फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट होता है जोटा सरकार विभिन्न अनफोर्सिन सिचुएशन बा किसी आकस्मिक घटना कि किसी विपदकालीन घटना को कौन घटना जो पैसा दरकार हुए से कंटिजेंसी फंड रु पैसा काढ़ी से माने बिना लेजिस्लेटिव सैंक्शन रे करि परिबे तेणु ये जो तीनोटी पांठी जेमती सर्वभारतीय स्तर में रही सेमती ओडिशा रे भी अच्छी तो ओडिशा रो जो बजेट बा विभिन्न आकलन विषय आम देखिले तो एम सारा बहुत सारा वीडियो आम आडा 247 ओपीएससी वाईटी रे आनिबू बा आणुचु सो काइंडली follow our channel Adda247 OPSC जो माने सब्सक्राइब करिन बा जो माने Adda247 OPSC रे ए सब जिनस रे देखिया पई चाहू से माने ए सब जिनस Adda247 OPSC चैनल को सब्सक्राइब करो एवं प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ठीक अछि फॉर ए फ्लोरिशिंग कैरियर इन competitive examination. Thank you very much to all of you. See you in the next video.